જૂનાગઢના ભવનાથમાં આજથી મહાશિવરાત્રિના મેળાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે। ભવનાથ મંદિર ખાતે ધ્વજારોહણ બાદ વિધિવત રીતે મેળાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો મહાસંગમ સમાન મહાશિવરાત્રિનો મેળો જૂનાગઢના ભવનાથમાં આજથી શરૂ થયો છે, જે આગામી 8 માર્ચ એટલે કે મહાશિવરાત્રિની મધ્યરાત્રિ સુધી ચાલશે। મેળાના પ્રથમ દિવસે ભવનાથ મંદિર ખાતે મોટી સંખ્યામાં શિવ ભક્તોએ શીશ ઝુકાવ્યું હતું। શિવરાત્રિના મેળાને લઈને શિવ ભક્તોમાં અનેરો ઉમંગ, ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ જોવા મળ્યો હતો। આ મેળાનું ખાસ આકર્ષણ હોય છે નાગા સાધુઓ, જે ધૂણી ધકાવી ભવનાથમાં શિવ ભક્તોને દર્શન આપતા હોય છે। અહીં નાગા સાધુના અવનવા રંગો પણ જોવા મળ્યા છે। કોઈ ગોગલ્સમાં તો કોઈ ગુલ્ફીના લુફ્ત ઉઠાવતા આ નાગા સાધુઓ જોવા મળ્યા હતા। બીજી તરફ મુક્તાનંદ બાપુએ પણ મેળાના મહત્વ અંગે પોતાના શબ્દોમાં પ્રતિક્રિયા આપી હતી। आज के दिन 5 तारीख से शिवरात्रि का परंपरागत मेला जूनागढ़ में भवनाथ महादेव में शुरू हुआ। भवनाथ महादेव को प्रथम ध्वजा चढ़ती है, फिर जो है जूना अखाड़ा, अभान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये तीनों अखाड़ा में ध्वजा चढ़ती है और मेला का शुभ आरंभ हो जाता। मेला में पूरे भारतवर्ष में से भिन्न भिन्न राज्य से साधु संत आते हैं और साधु संतों अलग अलग धूना डाल के भजन उपासना करते हैं, भगवान भोलानाथ की प्रार्थना करते हैं। और शिवरात्रि के मेले के अंदर करीब 12 से 15 लाख पब्लिक जो है इकट्ठी होती है और धर्म श्रद्धा से शिव जी की आराधना करते हैं। ये स्वयंभू मेला है, इसका आयोजन जो है स्वयं जो है जनता करती है और सरकार अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था करती है। और यहाँ एक परंपरा है कि शिवरात्रि के दिन रात को 10 बजे रवेड़ी निकलती है, जिसमें जूना अखाड़ा, अभान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, तीनों अखाड़ा की रवेड़ी पूजा जो है माँ, उनमें जो दत्तात्रेय भगवान की पालकी निकलती है, इसमें अभान अखाड़े में श्री गणपति जी की पालकी निकलती है, अग्नि अखाड़े में माँ गायत्री की पालकी निकलती है। इस तरह से तीनों अखाड़ा के साधु साथ में मिलके अपने देवताओं की पालकी लेकर मुर्गी कुंड में रात को 12 बजे स्नान करते हैं। श्रद्धा विश्वास से साधु स्नान करते हैं, फिर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, पूजन अर्चन भवनाथ जी का करते हैं। फिर रात को 2 बजे मेला जो है संपन्न होता है। इस मेले के अंदर कहीं उतारा व्यवस्था होती और कहीं लोग आकर जो है हजारों लोगों को भोजन कराता है। ऐसे सैकड़ों उतारा जो है भवनाथ में पड़ते हैं। ये भी एक मेला की शोभा है, एक परंपरा है। यहाँ दामोदर कुंड भी है, वहाँ भी परंपरागत लोग स्नान करते हैं, मगर मुर्गी कुंड जो है साधु रात को 12 बजे स्नान करते हैं और मेला संपन्न होता है। और ये 3 जो है रवेड़ी पालकी निकलती है। ये आदिकाल से मेला चलता है। हरिओम। આ વર્ષે મહાશિવરાત્રિ મેળો 5 માર્ચથી 8 માર્ચ સુધી યોજાશે, જેમાં લાખોની સંખ્યામાં શિવ ભક્તો ઉમટી પડશે। તો ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રિના મેળાનો પ્રારંભ થયો છે। વિધિવત રીતે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। અનેક શિવ ભક્તોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર શિવરાત્રિનો મેળો છે અને ભવનાથનો મેળો તો અનેરો અને અનોખો હોય છે। તો શિવરાત્રિના મેળા માટે આજથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી। રાવલિયા મધુ સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, ટુડે ગુજરાતી ન્યૂઝ।